जो सारा कर जो पढ़ा वाला योजना जय श्रीराम बिंदु श्रद्धा किटू गुड इवनिंग एवरीवन दीपांजलि ठीक अच्छे 8 आम क्लास अच्छी 7 ରୁ 8 एनफ आराम से क्वेश्चन डिस्कशन करिया एंड 8 बड़ सरी जाइतो क्वेश्चन तापर हम आज यूजुअल ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करिया ठीक अछि कृष्णा क्रिएटर गुड इवनिंग सूरज सत्यपुरी गुड इवनिंग एवरीवन तो एतिकी पिला हम आसीबे स्टार्ट कर दवा चलो तो तुम थंबनेल ऑलरेडी देखि परथियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो थे कि तुम पाइबो दैट इज क्वेश्चन होची बायोटेक्नोलॉजी रो क्वेश्चन अछि एंड सेकंड फेज रो क्वेश्चन तुम पाइबो दैट इज हेल्थ और डिजीज रो क्वेश्चन तो देरी न करी स्टार्ट करिया 30 जण वाचिंग करछन एंड जल्दी जल्दी शेयर करो एंड वीडियो को 50 करो देन हम स्टार्ट कर दवा चलो फर्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप नॉन स्पेसिफिक और से पढ़ो एंड पूरा बढ़िया से आंसर दियो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन रो क्वेश्चन गुड इवनिंग एवरीवन राधे राधे देवाशीष पायल सिलेक्ट द इनकरेक्ट देखो मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप नॉन स्पेसिफिक हम जानि छे मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक ठीक अछि स्पेसिफिक होबा कथा बीटी टॉक्सिन जीन आर कोडेड बाय द नेम क्राई ठीक अछि हम जानि छे बीटी टॉक्सिन दैट इज जो बैक्टीरिया रसी बैक्टीरिया ना होची बैसिलस thuringiensis ऑलरेडी तुम जानि छो तो बैसिलस thuringiensis जो टॉक्सिन ता आसे एंड से टॉक्सिन ता को जनरली इंड्यूस करा जाय कहा दिरे ना कोन सी प्लांट देरे जेमति कॉटन प्लांट रे जदि हम ताको इंड्यूस करूचे ताले बीटी टॉक्सिन प्लस कॉटन ताको हम कहले बीटी कॉटन तो कोन भाई एटा हेल्प करे दैट इज विदाउट एनी यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड बा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड यूज न करिकी हम केमिति दैट इज गच्छ को पोको दायरु रक्षा कर परिया ओके जीन क्राई आईएसी एंड क्राई डबल आई एबी फॉर्म द प्रोटीन फॉर द कॉटन बोलम ठीक अछि क्राई आईएबी फॉर द कॉर्न बोरर ठीक अछि ताले कोटा इनकरेक्ट हो दैट इज ए इनकरेक्ट पचाची संजुला सुनयना सदा किट्टू अंकिता परफेक्ट बुझियला हम जानि छे बीटी टॉक्सिन दैट इज द इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप एंड सेकंड पॉइंट जोटा देला कि बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय द नेम क्राई ऑलरेडी नीट रे भी 2024 रे क्वेश्चन पचाची बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय द जीन क्राई एंड जीन क्राई आईएसी क्राई डबल आईएबी स्ट्रिक्टली मन रखिबो दैट इज आईएएसी एंड क्राई डबल आईएबी फॉर द कॉटन बोलो एंड क्राई आईएबी फॉर द कॉर्न बोरर प्रियंका लोपामुद्रा शुभस्मिता रेडी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए थ्रू द फेज इज डन बाय हमें कहि परिया गोटे बैक्टीरिया रे डीएनए को अन्य गोटे बैक्टीरिया रे डीएनए वन ऑफ द गोटे बैक्टीरिया रे डीएनए को बैक्टीरियोफेज सहायता रे आ गोटे बैक्टीरिया रे इंट्रोड्यूस करियाटा कोन कहै छै दैट इज ट्रांसडक्शन बा हमें कहि परिया ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम द वन बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया थ्रू द बैक्टीरियोफेज और फेज इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन गोटे बैक्टीरिया डीएनए को अन्य गोटे बैक्टीरिया डीएनए रे इंट्रोड्यूस करबा बा अन्य गोटे बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करबा थ्रू द बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन आर बहुत सारा फेजेस अछि लाइटिक फेज अछि प्रथम बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को अटैक करिवो देन बैक्टीरियोफेज गोटे भाइरस हम जानि छे बैक्टीरियोफेज इज ए भाइरस व्हिच अफेक्ट द बैक्टीरिया तो जेतोले बैक्टीरियोफेज जेतोले गोटे बैक्टीरिया को अफेक्ट करिवो तो जनरली तार जेनेटिक मटेरियल ता बैक्टीरिया को छाड़िबो देन तार जेनेटिक मटेरियल ता कोन करिवो ना बैक्टीरिया डीएनए को एट इज कट करि देबो देन अगेन जेतोले ताको कैरी करिवो तो बैक्टीरिया डीएनए को निजस्व कैरी करिवो एंड जेतोले नुवा गोटे बैक्टीरिया को अफेक्टेड करिवो तो नुवा बैक्टीरिया दैट इज जो प्रीवियसली जो बैक्टीरिया डीएनए को कैरी करथो ताको इंट्रोड्यूस कर दबो लेट इट दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन चलो द फॉलोइंग आर ऑल द जीन एक्सेप्ट अंक भितर कोटा जीन नुहो द फॉलोइंग आर ऑल जीन एक्सेप्ट सेही बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन क्वेश्चन भूमिका ट्रांसडक्शन तृप्ति लोपामुद्रा बिंदु भूमिका प्रियंका बढ़िया अछि कोन आंसर
आम जाने क्राय आईएसी ठीक अच्छी, क्राय आईएबी ठीक अच्छी, बट आम जाने आरओपी भी ठीक अच्छी, बट साल आई तो गोटे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टा जोटा कि को बैक्टेरिया आछि साल्मोनेला टाइफी मन नहीं दैट इज साल्मोनेला टाइफी रु आसुतिबा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सो दैट हम कहि पारे कि साल ओयन इज आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हेपाटाइटिस बी वैक्सीन इज ए फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन ना प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो ए जिंसटा टिके बुक रो बाहर क्वेश्चन दैट इज जदि हम कहिया प्लस 2 लेवल हो किंबा तमरो एनसीईआरटी हो कि जो भी बुक तुम फॉलो करछो तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन सेकंड जनरेशन वैक्सीन ए विषय क्लियरली मेंशन न थाए तो तुम एटा मन रखियो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन सेकंड जनरेशन वैक्सीन ए सब जिंस रे। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होची गोटे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन टा दउछो जेमति कि एग्जांपल तार हे परियो इन्फ्लुएंजा। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन रे तुम मन रख परियो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन रे मन रखो दैट इज इन्फ्लुएंजा। देन सेकंड जनरेशन वैक्सीन रे तो मन रखियो दैट इज डिप्थेरिया हे परियो। थर्ड जनरेशन तो मन रखियो हेपाटाइटिस बी सेकंड जनरेशन भी हे परियो। और बा हमें कहबा प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड थर्ड जनरेशन बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन एनकोडेड जीन क्राय आईएबी कोन हबो प्रोटीन एनकोडेड क्राय आईएबी। एबे क्वेश्चन हमें करले दैट इज क्राय आईएसी एंड क्राय डबल आईएबी फॉर द कॉटन बोलोम एंड क्राय आईएबी फॉर द कॉर्न बोरोर। ताल कोन आंसर मूनलाइट प्रताप भूमिका शुभलक्ष्मी इतने कम पिला कोन मैच तो जाय कि दैट इज सीएसके एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मैच तो स्टार्ट हो जाय कि 7:30 परे बट इतने कम पिला कोन जल्दी जल्दी शेयर करो एंड कोड गले सब पिला लिपिका कॉर्न बोरोर परफेक्ट विजयलक्ष्मी अर्चिता कीर्तिमयी आंसर दैट इज हम जानि छे प्रोटीन एनकोडेड जीन क्राय आईएबी कंट्रोल द कॉर्न बोरोर स्ट्रिक्टली मन रखिया क्राय आईएसी एंड क्राय डबल आईएबी फॉर द कॉटन बोलोम and the cry IAB for the corn borer बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरापी वाज गिवन इन प्रथम क्लिनिकल जीन थेरापी को मसिया रे कराइतला डायरेक्ट एनसेट रु फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरापी वाज गिवन इन बाजी लागि छथि क्लास तो आसे कथा ना तापर 7:30 टाइम बहुत अछि। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरापी वाज गिवन इन आंसर कोन सी 1995 1990 1990 मसिया रे हितला हमें जानि छे दैट इज यूनाइटेड स्टेट रो गोटे 4 वर्ष रो जियो केस रे कोन हितला ना एडेनोसाइन डीअमीनेज रो डेफिशिएंसी हितला एंड एडेनोसाइन डीअमीनेज डेफिशिएंसी हितले कोन हबो ना इम्यूनिटी टा जनरली वीक हे जबा इम्यूनिटी रो लॉस हबो बिकॉज़ एडेनोसाइन डीअमीनेज एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो जनरली मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जदी मैच्योरेशन हेई परिवनी तो इम्यूनिटी जनरली लूज हबो एंड इम्यूनिटी जदी लॉस हबो अल्टीमेटली से कोन हबो ना एई जियो केस रे प्रथम क्लिनिकल जीन थेरापी कराइतला बा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी कराइतला देन होच तारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराइतला बट एगोडा सब कंप्लीटली क्यूरेबल प्रोसेस नथिला। देन जदी हम तार एम्ब्रियोनिक स्टेज रे डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करे देबा ताहाले एटा कंप्लीटली क्यूरेबल। ताले आंसर होच हमर कोन ना 1990 ठीक अछि फाइनली आंसर बी हबो राइट। तो आमे कहबा कि 1990 मसिया रे से जियो केस रे कराइतला गोटे 4 वर्ष रो जियो दैट इज द ना थिला होची अशांति डेसिवा अशांति जियो रो ना होची अशांति डेसिवा एंड जनरली 1990 सेप्टेम्बर 14 आई थिंक एई डेट रे दैट इज फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरापी कराइतला जो थरे कि तारा एडेनोसाइन डीअमीनेज रो डेफिशिएंसी ला। तमु आकु ने कि बहुत सारा क्वेश्चन पचारे परबो कि 4 इयर्स चाइल्ड चिल्ड्रन केस रे बा 4 इयर्स रो गर्ल केस रे को एंजाइम रो डेफिशिएंसी थला एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी कोन पई कराइतला ना ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एडेनोसाइन डीअमीनेज व्हिच इज एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द इम्यूनिटी। तो एई पेशेंट केस रे कोन आइतला ना ईआरटी कराइतला बा एंजाइम रिप्लेसमेंट कराइतला बोन मैरो को ट्रांसप्लांटेशन कराइतला एंड से गर्ल रो लिम्फोसाइट को दैट इज गोटे कल्चर मीडिया को आनी कि देन तादरे फंक्शनल एडीए दिया होतला बट एटा जेहेतु हमें जानि छे लिम्फोसाइट ता होची नॉट इमोर्टल बा किछि दिन परे लिम्फोसाइट रो भी दैट इज डेड हे जिवो। सो जदी हमें तार एंजाइम टा को एम्ब्रियोनिक स्टेज रे रिप्लेस करे दो ताले इट इज कंप्लीटली क्यूरेबल। तृप्तिमयी इट्स ओके भूमिका प्रियंका चलो तो कोन हबो नेक्स्ट
तो तमरो ऑलरेडी हमें सब क्लास रे भी एटा कहू छी कि 2000 एमसीक्यू तमरो डिस्कशन कहू छी 10 टा फुल मॉक टेस्ट अछि एंड ए रिलेटेड जहार भी किछि करियर थिबो देन तमे गूगल फॉर्म फिल अप करके दैट इज एनरोल करि पारो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, द थर्मोस्टेबल एंजाइम टैक एंड पीएफयू आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया आर डीएनए पॉलीमरेज ना आरएनए पॉलीमरेज। देखो ये क्वेश्चन गुडा को एथि पई लिखा है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थर्मोस्टेबल एंजाइम टैक एंड पीएफयू आइसोलेटेड फ्रॉम कौन हम डीएनए पॉलीमरेज। लिपिका परफेक्ट आंसर दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, परफेक्ट डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। इनकरेक्ट मैचिंग सर प्रणाम, नवकिशोर वॉइस ऑफ कृष्णा, बी अंकिता, बी सिंपल ट्रिक, सस्मिता पायल डीएनए पॉलीमरेज, शाश्वती, भाग्यश्री, सुस्मिता, विवेक, नवकिशोर। इनकरेक्ट मैचिंग कौन हम एडीए रो फुल फॉर्म हमें जानिचे एडेनोसाइन डीअमीनेज, राइट। एलाइजा रो फुल फॉर्म कौन एडेनोसाइन डीअमीनेज, दिस इज अमीनेज, परफेक्ट एटा भूल अछि ए। देन एलाइजा रो दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमर्स लिखा है बोधा एठी पॉलीमरेज होबा कथा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीकेयू फिनाइल क्यूटेनेरिया। तो जनरली एटा को तमे लॉन्ग भाबनी, तो आंसर होची दैट इज एडीए। फाइनली आंसर डी श्रद्धा किटू, विवेक, भूमिका, अर्चिता, अंकिता, कीर्तिमय, पायल, बढ़िया दैट इज एडेनोसाइन डीअमीनेज होबा कथा बट एडेनोसाइन अमीनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मॉलिक्यूलर सीजर जनरली रेफर्स टू। मॉलिक्यूलर सीजर बोली हमें काहा को रेफर करछे, सार्थक ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट ए, परफेक्ट। Then the term molecular seizure generally refers to DNA polymerase, RNA polymerase, restriction endonuclease, DNA ligase. कौन हबो? The term molecular seizure generally refers to DNA polymerase, RNA polymerase, restriction endonuclease. कौन हबो? C, that is restriction endonuclease. पढ़े अछि restriction endonuclease। तापर मते को which of the following option important for the joining of the DNA with the vector। गोटे वेक्टर को गोटे हमर जीन ऑफ इंटरेस्ट को बा हमर जदी कहबा डिजायर जीन को जदी हमें वेक्टर सह लाइगेट करियर अछि बा जॉइन करियर अछि ताले which enzyme is responsible? RNA polymerase, DNA ligase, DNA polymerase or restriction endonuclease? Which one is important for the ligation of desired gene or the gene of interest to the vector? DNA ligase। then मते को bacteriophage is a virus or bacteria? Bacteriophage is a virus or bacteria? is a virus or bacteria? Bacteriophage टा गोटे virus टा ना गोटे bacteria टा? anyone? sir myself रुचिका, okay रुचिका, that is bacteriophage is a virus which affect the bacteria. Suppose this is the bacteriophage and bacteriophage जदि गोटे bacteria को affect करछि, this one the bacteria and this is the bacteriophage। तो जो bacteriophage टा बा जो bacteriophage बा जो virus टा bacteria affect करे, this called as bacteriophage। next question, ADA deficiency is due to insertion of gene, duplication of a gene, deletion of a gene ना translocation of gene? कौन हबो? ADA deficiency is due to insertion of a gene, duplication of a gene, deletion of a gene, then translocation of gene. Obviously answer that is the deletion of a gene। तापर मते को कि 1997 रे काउर ना कोन थिला जहा कि रो मिल्क टा न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस थिला अदर काउर मिल्क थारु। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस रे जो काउटा को प्रोड्यूस कराइतला तार मिल्क टा जनरली मोर बैलेंस बा न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस थिला देन द नॉर्मल काउ मिल्क। नॉर्मल काउ मिल्क थारु ए जो काउटा थिला काउर ना कोन 1997 रे बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ए काउ वाज प्रोड्यूस्ड बा हम कहि पर रिकॉम्बिनेंट जे गोटे काउर जेनेटिक टा को मॉडिफाई कराइतला तो तार मिल्क टा न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस थिला देन द नॉर्मल काउ मिल्क। व्हाट इज द नेम ऑफ द काउ? कोन आंसर? डिलेशन ऑफ जीन रोजी, राइट। केते परसेंट मिल्क थिला रोजी
एंड ये जो रोजी नामक काओ मिल्क टा थिला दैट इज 2.4 ग्राम पर लिटर राइट परफेक्ट तापर मते को दैट इज ह्यूमन इंसुलिन टा को कंपनी प्रोड्यूस करथिला ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच कंपनी ह्यूमन इंसुलिन को कंपनी दैट इज प्रोडक्शन करथिला एनीवन 2.4 ग्राम पर लिटर पड़े अछि रोजी कावर ना थिला रोजी एंड 2.4 ग्राम पर लिटर 1997 रे बट जीन थेरापी जोटा को हमें कहूचे एंजाइम इली लिली कंपनी शुभस्मिता बढ़िया अछि दैट इज इली लिली कंपनी अमेरिकन गोटे कंपनी थिला जाय की कोन करथिला ना 1983 आई थिंक तो दैट इज ह्यूमन इंसुलिन करथिला मते को की इन द मैच्योर इंसुलिन व्हिच पेप्टाइड चेन इज एब्सेंट A B C that is which peptide is absent in mature insulin A is absent or B is absent or C is absent or which peptide chain is absent in mature insulin A B or C इली लिली बढ़िया अछि समस्तिंकर दैट इज इली लिली ठीक अछि ऐश्वर्या दीप्तिमयी भूमिका सूरज हरिहर कान्हा राज अंकिता अशांत निवेदिता विजयलक्ष्मी शुभस्मिता कीर्तिमयी विजयलक्ष्मी सार्थक संजुला श्रद्धा किटू तृप्ति जीत सत्यम भाग्यश्री विवेक सुशांत रविनारायण लिपिका बढ़िया अछि समस्तिंकर श्रद्धा किटू तृप्ति लोपामुद्रा सी इज एब्सेंट देन मते को कि दैट इज which bond is present between the A and the B suppose this is the A and this is the B suppose this is the C then which bond is present between A and B को bond present है peptide bond or disulfide bond or ester bond which bond present in human insulin peptide disulfide na that is A and B bind with the disulfide bond perfect ready तापर मते को कि पैनक्रियाज रो को सेल जनरली रिलीज करे इंसुलिन व्हिच सेल ऑफ द पैनक्रियाज रिलीज इंसुलिन अल्फा सेल बीटा सेल ना डेल्टा सेल व्हिच सेल डेल्टा ना बीटा ना अल्फा व्हिच सेल विल रिलीज इंसुलिन अल्फा बीटा डेल्टा व्हिच सेल विल रिलीज इंसुलिन कोन हबो डाइसल्फाइड शाश्वती विजयलक्ष्मी अनिल जीत सत्यम मेहरुनिशा प्रियंका निवेदिता श्रीनिवास रुचिस्मिता बढ़िया समस्तिकर बढ़िया दैट इज अल्फा सेल रिलीज करे ग्लूकागन एंड बीटा सेल रिलीज करे इंसुलिन तापर मते को कि व्हिच हार्मोन को हार्मोन टा जनरली रिस्पांसिबल टू ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज ग्लाइकोजेन रु ग्लूकोज को भांगिया पई को हार्मोन टा रिस्पांसिबल ग्लूकागन और इंसुलिन व्हिच हार्मोन इज रिस्पांसिबल टू ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज जेतबेले ब्लड रे ग्लूकोज लेवल कमी जिवो व्हिच हार्मोन इज रिस्पांसिबल टू ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज ग्लूकागन और इंसुलिन कोन हबो ग्लूकागन और इंसुलिन व्हिच हार्मोन इज रिस्पांसिबल टू ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज ग्लूकागन दैट इज ग्लूकागन हमर जेतबेले ब्लड रे ग्लूकोज लेवल कमी जिवो बा व्हेन सपोज एग्जांपल नबा सपोज सत्यपुरी is taking suppose due to the prolonged fasting बा जदि सत्यपुरी कोनसी कारण रु पूरा आमरण अनशन करा होची एंड किछि भी ग्लूकोज इनटेक करूनी बा किछि फूड इनटेक करूनी इन दैट केस रे कोन हो जदि से फूड इनटेक करनी ताल अल्टीमेटली दैट इज तार जीआई ट्रैक्ट बा एलिमेंटरी कैनाल रे फूड पहुंचो नथिबो एंड अल्टीमेटली जदि एलिमेंटरी कैनाल रे फूड पहुंचोनी देन हमें कहबा तार ब्लड रे भी दैट इज ग्लूकोज आसु नथिबो ब्लड को न्यूट्रिएंट जाउ नथिबो देन ब्लड जदि न्यूट्रिएंट जीवनी बा ब्लड रे ग्लूकोज लेवल कमी जीवो देन हमें जानि छे दैट इज ह्यूमन रो लिवर होच गोटे कैमेल बा ओटो रो हम जेमती दैट इज ह्यूमन रो लिवर सेमती ओटो जेमती तार टापुरे दैट इज फूड एंड दैट इज वाटर को स्टोर कर रखे सो लाइक लिवर भी हमरो एक्सेस ग्लूकोज टाको ग्लाइकोजन फॉर्म रे स्टोर कर रखे तो जेतले ब्लड रे ग्लूकोज लेवल कमी जीवो दैट इज द ग्लूकागोन विल एक्ट ऑन द लिवर and that is the glycogen will break down to glucose and the blood glucose level will increase and so that glucagon is called as hyperglycemic hormone right glucagon चलो next question जीवा permanent cure of ADA ए जो 4 वर्षर झियो केस रे करा हितला अशांति नामक झियो 1990 बा 1990 मसिया सेप्टेम्बर 14 रे जो करा जायतला एडेनोसाइन डीअमीनेज डेफिशिएंसी को क्योर करिया पई बा फास्ट क्लिनिकल जीन थेरापी
जो झियो केस रे कराइतला तार परमानेंट क्योर टा कोन हेई परियो जेनेटिक इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट ना बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन तार बोन मैरो भी ट्रांसप्लांटेशन करा जाइतला बट सेटा क्यूरेबल नथिला एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बा जोटा ईआरटी कराइतला से भी क्यूरेबल नथिला बट जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट बा तार कंप्लीटली लिम्फोसाइट को कढा हेतिला एंड लिम्फोसाइट रे फंक्शनल एरिया दिया हेतिला बट सेटा भी कंप्लीटली क्यूरेबल नथिला अरे 76 वाचिंग किंतु लाइक मात्र 37 फ्रेंड माने जल्दी जल्दी लाइक करते सार पुनी कहिबे ओके तो दैट इज कोन हबो एडीए जीन इंट्रोड्यूस इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज जदी तमे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज रे एडीए टाको तमे इंट्रोड्यूस करि दोछो देन पुला पिला पूरा रेडी बट जदी परे दैट इज तार बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करूछो किंबा तार एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करूछो किंबा तार जेनेटिक इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट को बाहर करछो एटा कंप्लीटली क्यूरेबल नो परमानेंट क्योर केतबेले हबो जदी तार एम्ब्रियोनिक स्टेज बेले बा जेतले बेबी रो जदी तमे सोनोग्राफी करिकि कि एनी अल्ट्रासाउंड करिकि तार इंटरनल जेतले तमे देखि जानि परिबो कि डॉक्टर जानि परिबो कि तार कोनोस गोटे जीन रो डेफिशिएंसी अछि बा एडेनोसाइन डीएमिनेज रो डेफिशिएंसी अछि इन दैट केस रे तमे एम्ब्रियोनिक स्टेज रे जदी ट्रीटमेंट करै दोछो बा फंक्शनल एडीए दे दोछो देन इट इज completely permanent curable the first clinical gene therapy was given to a girl 4 years already I discussion kari sari symptoms like internal bleeding muscular pain fever anemia and blockage of intestine process occurs in which disease को disease कारण रे एटा हुए ब्रजेश सर 11D कीर्ति भाई गुड इवनिंग सर प्रणाम रंजिता हिरणमया शुभस्मिता सुशांत देवाशीष सूर्या भूमिका निवेदिता श्रद्धा किटू अशांत अशांत बट झीर ना थिला अशांति जो 4 वर्षर झीर ना थिला अशांति एंड हियर देयर इज अशांत विजयलक्ष्मी शिव प्रसाद वंशिता धर्मेश रुचिस्मिता प्रियंका विजयलक्ष्मी सार्थक शिव प्रसाद निवेदिता ओके दैट इज कोन हला ए टाइफाइड इंटरनल ब्लीडिंग मस्कुलर पेन एनीमिया ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन कहा द्वारा हुए एटा होची जनरली एस्कारियासिस सपोज दिस इज योर स्टोमक एंड दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली तमु जेतले डिजीज हबा एस्कारियासिस तो एस्कारियासिस रे कोन हुए एस्कारियासिस डिजीज कॉज्ड बाय द ओरम दैट इज कॉल्ड एज एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड्स तो ये जेतोले तुमको अफेक्टेड करिवो एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड्स तो जनरली तमरो इंटेस्टाइन रे एते रेप्लिकेट करिवो इंटेस्टाइन रे एवला पोको गुडा को पूरा हेई जिवे माने तुम जदी देखिवो कि बहुत सारा सर्जरी वीडियो भी तुम देखिवो गूगल रे एस्कारिस डिजीज मानको केस रे बा एस्कारिस पेशेंट मानको केस रे केमिति दैट इज इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर दिया एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड्स जस्ट लुक लाइक ए मैगी बा चाउमिन जे मैगी एंड चाउमिन जेमति देखा जिवो तो सेही बेला एस्कारिस तमरो स्मॉल इंटेस्टाइन रे पूरा पूरा ताको ब्लॉक कर देथिबे माने पोको उडा थिबे माने कि जस्ट चाउमिन जेमति देखा जाय जस्ट पूरा हळदे हेगिरी चाउमिन जहा देखाबे से बेले देखाबे पूरा इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देथिबे जहा फल कि इंटरनल ब्लीडिंग हबो मस्कुलर पेन हबो फीवर हबो एनीमिया हबो एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन गोटे वर्ड तुम बा रिलेट कर परिबो दैट इज इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज एस्कारियासिस देन मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज which of the function जेति की ऑप्शन देछि which of the following option is a bacterial disease विजयलक्ष्मी बैक्टीरियल डिजीज या भितर के टाइफाइड ना मलेरिया ना निमोनिया which of the following option is a bacterial disease कौन हबो बैक्टीरियल डिजीज के टाइफाइड और निमोनिया टा हाँ टाइफाइड हबो दैट इज टाइफाइड इज ए बैक्टीरियल डिजीज एंड द बैक्टीरिया ना होची साल्मोनेला टाइपी जोटा हम जानि छे एंड निमोनिया जदि हम देखिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इट इज आल्सो ए बैक्टीरिया और वायरस निमोनिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज एनीवन निमोनिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज निमोनिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया दिस इज ए बैक्टीरिया तो निमोनिया एंड द टाइफाइड दीज आर द बैक्टीरियल डिजीज बैक्टीरिया निमोनिया टा जो निमोनिया कॉज करथिबा बैक्टीरिया ना होची स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज ए बैक्टीरिया सो हमें जदी एपे क्वेश्चन पचारिया निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड भितरे which one is the viral disease and which one is the bacterial disease हम जानि छे कॉमन कोल्ड इज वायरल डिजीज बट क्वेश्चन इज
generally pneumonia रे respiratory tract infection हुए ना that is the lungs affected हुए respiratory tract infection हुए ना lungs affected हुए pneumonia रे कौन हुए bacterial disease perfect common cold is a viral disease and the rhinovirus but हम जो देखिबा pneumonia रे generally कौन हुए that is the lungs बा alveoli टा air bag टा generally water fill ही जाए जहाँ पर difficulty in breathing हवा and problem हवा that is हम कहि परिया pneumonia रे generally lungs affected हुए and lungs रे Bidyasagar that is lungs affected हुए and lungs रे जो air bag रहिला बा जोटा हमें alveoli बोली कहउचे तो generally alveoli टा water fill ही जाए okay right एइड मते मन पडला गोटे क्वेश्चन जदि हमें पचारिया सपोज एक्सीडेंट रे जनकर दीटा मसल हमें जानिचे देयर आर टू मसल्स आर देयर इन आवर लंग्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द कंट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन एंड दीटा मसल कोन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड अनदर वन इज डायफ्राम जदि गोटे एक्सीडेंट रे गोटे सिवियर एक्सीडेंट रे एंड जदि हमर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल टा पूरा कंप्लीटली डैमेज हे गला ओनली एंड ओनली डायफ्राम मसल रहिला तो हमें सेही केस रे परफेक्टली सेमती ब्रीदिंग करि परिया ना दैट इज कोन प्रॉब्लम होबो pneumonia lungs in pneumonia the lungs is affected and in common cold the upper respiratory tract is affected subasmita perfect pneumonia re generally lungs affected हुए but that is the common cold re respiratory tract problem arise होबा and लोकर death हे परियो बा that is हमर pressure टा perfectly balance हे परियोनी तापर मते को generally when the hemoglobin is bind with carbon monoxide what is the name of hemoglobin plus carbon monoxide carbaminohemoglobin na carboxy hemoglobin when hemoglobin bind with carbon monoxide ताको हम कोन कहया carboxy hemoglobin ना carbaminohemoglobin टॉस किए जितिला carboxy hemoglobin bind with carbon monoxide is called as carboxy hemoglobin bind with carbon dioxide called as carbaminohemoglobin hemoglobin bind with oxygen called as oxyhemoglobin अतएव को that is during the inspiration additional volume of air person can inspire by the forceful inspiration additional volume of air person can inspire by the forceful inspiration is called as inspiratory reserve volume the inspiratory capacity the expiratory reserve volume additional volume of air person can inspire by the forceful inspiration it is called as inspiratory reserve volume na expiratory reserve volume na tidal volume kon hobo inspiratory reserve volume then कहया that is even after the forceful expiration our lungs do not collapse due to the tidal volume na residual volume na inspiratory capacity na expiratory capacity our lungs do not collapse even after forcefully expiration and this term is related to tidal volume na residual volume na inspiratory capacity na expiratory capacity residual volume what is the value of inspiratory reserve volume inspiratory reserve volume रो value केते 6000 रो 8000 ना 1000 रो 1100 ना 1100 रो 1200 ना 2500 रो 3000 what is the value of inspiratory reserve volume आमे जानि छे टाइडल वॉल्यूम होची गोटे थर करे आमे 500 मिलीलीटर एयर नउचे एंड गोटे मिनिट रे 12 रो 16 थर आमे दैट इज ब्रीदिंग रो रेट पर मिनिट 12 टू 16 टाइम्स एंड गोटे थर रे जदी आमे 500 मिलीलीटर नउचे दैट इज 12 टू 16 टाइम्स रे 6000 रो 8000 सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रो वैल्यू केते 2500 रू 3000 बस समस्त का आंसर परफेक्ट निवेदिता शिवप्रसाद ऐश्वर्या शिप्रा रेडी देन मते को the area which is present adjacent to the respiratory rhythm center the area which is present adjacent to the respiratory rhythm center is called as pneumotoxic center or chemosensitive area the area which is located adjacent to the respiratory rhythm center is called as pons which is called as the pneumotoxic area or pneumotoxic center or chemosensitive area right lipika बढ़िया अछि अर्जिता that is Orjita chemosensitive area then chemosensitive area is highly sensitive to carbon dioxide and oxygen statement ठीक अछि ना भूल अछि chemosensitive area which is sensitive to carbon dioxide and oxygen ठीक ना भूल carbon dioxide and H plus false that is carbon dioxide and H plus then मते को that is the when no sufficient amount of oxygen reach to the heart muscle it is called as
when there is no sufficient amount of oxygen is reaching to the heart muscle, it is called as ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ମସଲ କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ ପହଞ୍ଚୁନି ୟାକୁ କଣ ଆମେ କହିବା? कार्बन डाइऑक्साइड एच प्लस सुभाष लक्ष्मी हरिहर बढ़िया अच्छी ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ମସଲ କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ ପହଞ୍ଚୁନି ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ଯେତେବେଳେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ ହାର୍ଟ ମସଲ କୁ ନ ପହଞ୍ଚେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? शुभंकर तुम मैच आग या तुम पाठ पढ़ाटा आग? हार्ट फेलुअर एंजिना, दैट इज एंजिना व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन रीच टू द हार्ट मसल, दैट इज कॉल्ड एज एंजिना बा एंजिना एंजिनल पेक्टोरिस, राइट? एंजिना, राइट? ओके तो एई वर्तमान पई सुधा तुम वाच करछंती 88 तो एथुर जणा पड़िबो कि केते जण दैट इज मैच देखिया पे इंटरेस्टेड आ केते जण दैट इज पढ़ा पे इंटरेस्टेड. angina when no enough oxygen reach to the heart muscle, that is called as angina. next question को जीवा. ओके तापर मते को कि malaria को malaria बा malaria disease is caused by the plasmodium vivax, plasmodium malaria and plasmodium falciparum. which one is the most fatal among plasmodium vivax, plasmodium malaria and plasmodium falciparum? which one is the most fatal? कोटा हबो most fatal कोटा? plasmodium falciparum. रुद्र प्रताप परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो. एनडीए पे छोटो अनाउंसमेंट अछि, दैट इज तमरो के रिलेटिव हो कि सांग साथी के भी जदि तम सराउंडिंग रे अछंती जो माने एनडीए पे प्रिपरेशन हो चाहउछंती तो विद्यासागर क्लासेस को से माने कांटेक्ट करि परिबे. ए नंबर रे से माने भी दैट इज जहां भी इंफॉर्मेशन दरकार बुझी परिबे. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंटामिनेटेड वाटर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विथ एग्स ऑफ राउंड वर्म कॉज कोन? फाइलेरियासिस ना मैलेरियासिस ना एस्केरियासिस ना निमोनिया? कोन हबो? श्रद्धा किटू ओनली पाठ प्रीति ज्योत्ना बढ़िया अच्छी. देवाशीष अरे मैच पर देखियो सरू क्लास 8 सरू देन देखियो मैच कौन अछि मझरे मझरे मझे मझे टिके देखियो पूरा नहले फाइनली देखियो लास्ट बेल को मैच देखले तुम कोन मैच चेंज कर दबो. जदी सीएसके जितियार थियो सीएसके जितिबो, जदी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जितियार थियो जितिबो. आमे केवल खाली देखिग्री निज निज भीतर फाइट करे कथा किछि नै. परे भी देखियो मैच कौन अछि. ओके that is कौन हबो? ascariasis बा ascaris lumbricoids टा contaminated water द्वारा स्प्रेड हे पारे. वेजिटेबल्स जदी जदी कोनोसी वेजिटेबल रे भी ascaris lumbricoids बा बाहर जदी हम जो माने जदी कोनोसी पेशेंट बाहर झाडा जाउची तो दैट इज हमरो मळ द्वारा वेजिटेबल्स रे लागि पारे एंड वेजिटेबल्स द्वारा भी इंजेक्ट कले हमरो बॉडी भीतर को ascaris lumbricoids आसी पारिबो. ठीक अछि चलो फाइली. अच्छा मते को कि राउंड वर्म टा को फाइलम? प्लैटिहेलमिंथेस ना एस्केलेमिंथेस ना एनिलिडा? व्हिच फाइलम इज राउंड वर्म? राउंड वर्म टा कोन? प्लैटिहेलमिंथेस ना एस्केलेमिंथेस ना एनिलिडा? राउंड वर्म दैट इज एस्केलेमिंथेस. कहार पडिला टॉस का जितला की ना बैटिंग कार? एस्केलेमिंथेस. परफेक्ट. खाली जस्ट खाली कहि दियो कि बैटिंग कहारो सेतिक शेष. देन क्वेश्चन को जिया. एस्केलेमिंथेस सीएसके ताल ठीक अछि. एस्केलेमिंथेस तापर मते को कि दैट इज मस्कुलर फेरिंक्स इज डेवलप्ड फ्रॉम व्हिच फाइलम? मस्कुलर फेरिंक्स टा को फाइलम रे डेवलप पूरा क्लियरली मेंशन कराई छि. मस्कुलर फेरिंक्स इज डेवलप्ड फ्रॉम व्हिच फाइलम? प्लैटिहेलमिंथेस, एस्केलेमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा. Muscular pharynx is developed from which phylum? आरसीबी बैटिंग करछि श्रद्धा किटू. आरसीबी बैटिंग ए भाई रे आरसीबी आज जितिया दरकार. बेलपत्र ठाकुर भाई दिया हो जितियो जदी. विराट कोहली द गोट. धोनी भाड़ में जाए छोड़ो उसको. दैट इज एस्केलेमिंथेस. ओके तापर मते को दैट इज फ्लेम सेल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ व्हिच फाइलम? को फाइलम रो फ्लेम सेल टा होचे एक्सक्रीटरी ऑर्गन. नेक्स्ट क्वेश्चन होचे हार्ट इज प्रेजेंट इन डोर्सल साइड. कॉर्डाटा ना नॉन कॉर्डाटा? फोर्थ क्वेश्चन ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डाटा और ऑल कॉर्डाटा आर वर्टिब्रेट. को फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कोन हबो? फ्लेम सेल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ व्हिच फाइलम? प्लैटिहेलमिंथेस. देन हार्ट इज प्रेजेंट इन द डोर्सल साइड नॉन कॉर्डाटा. बढ़िया. रेस्पोंसिबिलिटी फिल्म देखु विजय लक्ष्मी, तृप्ति, अंकिता, सुरोज, अर्जित, शुभंकर, प्रियंका.
तृप्तिमयी ओके फोर्थ क्वेश्चन कौन थिला दैट इज प्लाटियल मिथेस गला देन हार्ट इज प्रेजेंट इन डोर्सल साइड नॉन कॉर्डेटा कैरेक्टर देन फोर्थ थर्ड क्वेश्चन थिला ऑल कॉर्डेटा आर वर्टिब्रेट और ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेटा ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेटा बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉन वर्टिब्रेट देन मते को कि यूरोकॉर्डेटा और टुनिकटा जनरली आकर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वाल टेल एंड यूरोकॉर्डेटा टुनिकटा सेफालोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा आंक भितर कहार नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम among यूरोकॉर्डेटा और टुनिकटा सेफालोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा व्हिच आंक भितर ए ऑप्शन भितर कहार नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम यूरोकॉर्डेटा और टुनिकटा सेफालोकॉर्डेटा वर्टिब्रेटा कहार नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम असंत दैट इज वर्टिब्रेट देन मते को कि पिल्ला एप्पल स्नेल पिंक्टेड एपियोलोस्टर सेपिया कटलफिश लोलिगोस्क्विड ये सब कहार एग्जांपल पिल्ला एप्पल स्नेल पिंक्टेड एपियोलोस्टर सेपिया कटलफिश लोलिगोस्क्विड ऑक्टोपस डेविलफिश कहार एग्जांपल धड़ाधड़ को मोलुस्का देन मते को कि माइजिन हैगफिश कहार एग्जांपल पेट्रोमाइजन लाम्प्रे माइजिन हैगफिश कहार एग्जांपल पेट्रोमाइजन लाम्प्रे माइजिन हैगफिश कहार एग्जांपल पेट्रोमाइजन लाम्प्रे माइजिन हैगफिश कहार मोलुस्का पेट्रोमाइजन लाम्प्रे माइजिन हैगफिश मन पकाओ साइक्लोस्टोमाटा शुभस्मिता परफेक्ट साइक्लोस्टोमाटा रो गिल स्लिट्स टा केतेटा 6 रु 15 ना 9 रु 15 ना 10 रु 15 6 रु 15 गिल स्लिट्स आर देयर और 9 रु 15 ना 10 रु 15 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी साइक्लोस्टोमाटा दैट इज 6 टू 15 गिल स्लिट्स तापर मते को कि अमंग द कॉन्ड्रिस्टिस एंड ऑस्टिसिस कहार एयर ब्लैडर इज एब्सेंट सो कहार एयर ब्लैडर इज एब्सेंट अमंग कॉन्ड्रिस्टिस एंड ऑस्टिसिस व्हिच वन हैविंग नो एयर ब्लैडर 6 टू 15 परफेक्ट कॉन्ड्रिस्टिस एंड ऑस्टिसिस भीतर कहार एयर ब्लैडर टा जनरली एब्सेंट थाए कॉन्ड्रिस्टिस रो ना ऑस्टिसिस रो एयर ब्लैडर इज एब्सेंट इन कॉन्ड्रिस्टिस रुद्र प्रताप ओके तापर मते को कि दैट इज तो रोहीटा को एग्जांपल कॉन्ड्रिस्टिस रो एग्जांपल ना ऑस्टिसिस रोही माछ कहार एग्जांपल कॉन्ड्रिस्टिस और ऑस्टिसिस सीएस के ना कॉन्ड्रिस्टिस और ऑस्टिसिस ओके तापर मते को कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहार थाए इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहार थाए पॉइजन स्टिंग कहार थाए दैट इज इलेक्ट्रिक ऑर्गन ट्राइगन ना पॉइजन स्टिंग ट्राइगन टा कोन एंड टॉर्पेडो टा कोन ट्राइगन एंड टॉर्पेडो आ भितर कोटा इलेक्ट्रिक ऑर्गन एंड कोटा पॉइजन स्टिंग देवाशीष पारिक भर बस एमती खाली टिके मझे इनफॉरमेशन दउथा बस सेति के एनफ टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन एंड ट्राइगन दैट इज द पॉइजनस स्टिंग राइट आई एम द फैन ऑफ हिटमैन ओके तो नेक्स्ट को कि दैट इज हमें जो देखिबा थर्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन हंगर एरिया सैटिस्फाइड सेंटर दीज आर द पार्ट ऑफ थैलामस और एपिथैलामस और हाइपोथैलामस ये सब कहार फंक्शन थर्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन कहार फंक्शन है सब देयर मतलब कि बर्ड्स एंड मैमल्स दीज आर द पोइकोथर्म एनिमल और होमियोथर्म एनिमल बर्ड्स एंड मैमल्स दीज आर द पोइकोथर्म्स एनिमल्स और होमियोथर्म बर्ड्स एंड मैमल्स कौन हबो बर्ड्स एंड मैमल्स पोइकोथर्म और होमियोथर्म फटाफट आंसर दियो होमियोथर्म राइट ट्राइगन स्टिंग रे टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो फाइलेरियासिस इज आल्सो नोन एज एस्केरियासिस रिंगवर्म एलिफेंटासिस ना अमोइबासिस फाइलेरियासिस नै गोटे बढ़िया क्वेश्चन पचारे या परे कर आंसर कोन हबो 93 वाचिंग दैट इज फाइलेरियासिस इज आल्सो नोन एज एस्केरियासिस ना रिंगवर्म ना एलिफेंटासिस ना अमोइबासिस एलिफेंटासिस मते को कि जनरली आ परबोधे क्वेश्चन थिबो अच्छा फाइलेरियासिस डिजीज इज कॉज्ड बाय जनरली फाइलेरियासिस डिजीज टा कहा द्वारा कॉज हुए फटाफट आंसर दियो फाइलेरियासिस डिजीज इज कॉज्ड बाय सर आपण भी खेल पई अरे हाई वोल्टेज बैच ना टिके इंफॉर्मेशन दवा दरकार श्रद्धा किटुरो कॉमन डायलॉग फाइनली आंसर बी हबो सर सर मोर फास्ट आंसर मते आइसक्रीम पक्का को आइसक्रीम खाली को देगा ऊ चेरा बैंक्रप्टी
ऊचेरिया मलाई दैट इज हमें जाने छे फाइलेरियासिस डिजीज कॉज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइलेरियासिस टा बोधे ही पर क्वेश्चन टा फाइलेरियासिस रे ऊचेरिया मैक्रोटी हां बस दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऊचेरिया मैक्रोटी इन्फेक्ट which part of the human body? Blood vessels of the upper limbs, limb vessels of the lower limbs, blood vessel of the lower limb na limb vessel of the upper limb कौन हबो आंसर। आज आरसीबी हारिबो जीत जीत सत्यम सा टिके देई देबे नले कांदी के बसई दो सा हरिहर जय प्रभु हरिहर रक्षा करो शिव शंभु सूरज ठीक अछि कौन है आंसर दैट इज परफेक्ट कौन हो आंसर ताले देवाशीष समस्त कह कि जति आरसीबी जीतू सर आ केतेटा क्वेश्चन कान्हा आ कान्हा आ क्वेश्चन अछि केते एटा 17 हैला आ आई थिंक 4-5टा क्वेश्चन अछि 4-5टा क्वेश्चन वेट कर जा 98 वाचिंग ता 100 क्रॉस करा देन ठाकुर डाक कि आरसीबी जीतू ओके कौन हला दैट इज लिम्ब वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब जनरली हम जानि छे दैट इज द लोअर पार्ट ओडा रहला टेस्टिस हो बा हमर दैट इज द लिम्ब्स हो लोअर लिम्ब्स हो सेगोडा कि जनरली अफेक्टेड हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन which area causes acute inflammation ना chronic inflammation ना bacterial infection ना viral inflammation कौन हबो that is which area causes देखो acute माने जोटा कि suddenly disease टा हबो suddenly short time भीतर disease टा भलो होई जिवो but that is जदि हम कहे chronic disease माने जोटा बहुत वर्ष पता लागि रहिबो acute माने short term रे होई जिवो and chronic माने बहुत दिन पता लागि के रहबो त कौन हबो सर रंजिता एक्चुअली सबले क्लास हमर से 6 टा रे हुए बट आज 7 टा रे हिची बिकॉज़ 6 टा रे मैथ क्लास होतला सो दैट तो आंसर होची कोन देयर इज द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बहुत वर्ष पर्यंत फाइलेरियासिस डिजीज टा बा फाइलेरियर वर्म टा जनरली लोअर बॉडी पार्ट्स बा लोअर लिम्स रे जनरली बा लोअर लिम्ब रो लिम्फेटिक वेसल रे जनरली मल्टीप्लाई करी करी चले एंड जनरली हमें जो देखिबा इट इज ए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो द मोर सीरियस फॉर्म ऑफ मलेरिया malignant malaria is caused by plasmodium falciparum plasmodium malaria na plasmodium vivax na all of these कौन हबो कौन आंसर ताले दैट इज plasmodium falciparum ना plasmodium vivax समस्त आंसर कौन दैट इज ए प्लाज्मोडियम फालिसिपारम मैच हम फील्ड रे किंतु तम मैच हम चैट बॉक्स रे शुभंकर विराट कोहली द गोड तमे धोनी केबे 50 सेंचुरी पिटिथिलो छाड़ा कौन कहबी तम मान छाड़ देले तो ये भीतर फील्ड भीतर तम बाड़ा बाड़ी हिजे होते जा जाना पड़जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलो Plasmodium enters the human body as merozoite, hypnozoite, tropozoite, na sporozoites. And this is the most easiest question I think. Plasmodium generally enters to the human body as the कौन आंसर को फटाफट हाँ बा लागुची खेलटा हमर सतरे एठी होची चार्ट बॉक्स रे खेल होची कौन आंसर दैट इज sporozoites हम जानि छे generally suppose this is the mosquito and this is the suppose this is the mosquito and generally mosquito ro saliva रे जो infectious form टा रहला बा plasmodium टा infectious form टा रहला sporozoites the sporozoites से जेतोले गोटे healthy individual को कामुडिला बा गोटे मनुष्य को कामुडिला तो कोन होबो ना दैट इज डायरेक्टली जाई कि तार लिवर को अफेक्टेड करबा आगो बा लिवर रे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करिवो देन दैट इज आरबीसी को जीवो आरबीसी रे आल्सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करिवो देन बहुत समय पर्यंत रिप्रोडक्शन कला परे बा असेक्सुअली जनरली मल्टीप्लाई कला परे आरबीसी को रप्चर करिवो देन आरबीसी को रप्चर कला परे हिमोजिन रिलीज करिवो एंड हिमोजिन इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस जे कि जर हाई फीवर करेबो देन जनरली ब्लड मिल दे के आसीबो एंड मस्क्यूटो रो स्टोमक रे दैट इज द मेल एंड फीमेल फर्टिलाइजेशन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन where is the fertilization of male and female gamete occurs in mosquito body or in human body that is in the mosquito stomach re
male and female ro fertilization hobo, then again it will store in the mosquito saliva in the form of sporozoites, right? Okay, चलो 100 रे खेल होची चैट बॉक्स रे, राइट? सरू सरू क्वेश्चन सरू तापर देखिया सीएसके जितुची कि चेन्नई जितुची, लास्ट जणा पड़िबोनी सीएसके जितुची या आरसीबी जितुची। द वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम इज मेल एनोफिलिस मस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, एडिस इजिप्टी ना सैंडोम, कोन हबो? कोन हबो? दैट इज the vector of plasmodium is male anopheles mosquito, female anopheles mosquito, Aedes aegypti na sandom. The answer is that is female anopheles mosquito. Then मते कोई कि which is the vector of Aedes, which is the vector of, that is हम जदि कहया filariasis रो vector किए, which is the vector of filariasis? Generally filariasis disease रो vector किए? Vector of filariasis, female anopheles mosquito is the vector of malaria disease. कौन हो? Female culex. Okay, culex. Next question. In malaria, fever and chills occurs every 3 to 4 days due to the rupture of RBC and the release of which toxic substance? एबे ही हमें कहले that is जेतेबेले गोटे जदि हमर malaria disease होबो स्पोरोजोइट्स टा एंट्री करिवो बा तार इन्फेक्शियस फॉर्म टा फर्स्ट हमर लिवर को अटैक करिवो, देन हमर लिवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करिवो, देन आफ्टर द लिवर इट विल गो टू द आरबीसी, देन आरबीसी रे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कला पर आरबीसी को रप्चर करिवो, देन रप्चर होला पर द टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होबो एंड टॉक्सिक सब्सटेंस ना कोन? दैट इज हिमोजोइन। तो हिमोजोइन टा जनरली कोन करे बा जेतोले हिमोजोइन रिलीज होबो आरबीसी रो रप्चर हेकी सेतोले फीवर होबो, चिल्स होबो and every 3 to 4 days, right? Okay, the answer is hemogen. Next, sporozoites in mosquito are stored in intestine, salivary gland, mouth na proboscis, कौन हबो? स्वप्ना दी टीसीएच बीबी सर कौन आंसर ताले? स्पोरोजोइट्स मस्किटो दैट इज हम जानिचे इन द सलाइवरी ग्लैंड। तो एबे क्वेश्चन सरी एजी, दैट इज हम रैपिड फायर करिया 5 मिनिट। रैपिड फायर हम डिस्कशन करिया कोन? देखो फर्स्ट क्वेश्चन तुम पाखरे को, दैट इज प्लेटलेट रो जदी डिग्रेडेशन होबो ताले जनरली हम को प्रकार प्रॉब्लम फेस करिया? इफ द प्लेटलेट काउंट विल डिक्रीज देन व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी विल फेस इन योर लाइफ? इफ द प्लेटलेट काउंट विल डिक्रीज, प्लेटलेट रो कमी गले कोन होबो जनरली हमकु? फटाफट आंसर दियो सारिया। क्लॉटिंग प्रॉब्लम। देन मते कोइ कि नंबर 1 क्लॉटिंग फैक्टर ना कोन? फिब्रिनोजेन। जदि हम देखिया द नंबर 1 क्लॉटिंग फैक्टर इज फिब्रिनोजेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कोइ कि दैट इज द इफ द गॉल ब्लैडर विल रिमूव, जदि गोटे पर्सन रो गॉल ब्लैडर रिमूव कराय जिवो दैट इज द बाइल बा फैट जिंस रे खाइले किछि प्रॉब्लम होबो कि ना होबोनी? हम जानिचे जदि जनकर गॉल ब्लैडर रिमूव करे तो इनिशियल डे रे किछि प्रॉब्लम हो, बट आफ्टर सम डेज किछि भी प्रॉब्लम होबोनी बा एते किछि प्रॉब्लम होबोनी, बट फिर भी फैट जिंसडा दैट इज डेंजरस। ओके, लेट इट। तो मते को कि दैट इज when the heart muscle is suddenly damaged due to the inadequate blood supply, it is called as heart failure or heart attack or cardiac arrest. When the heart muscle is suddenly damaged due to the inadequate blood supply, it is called as, when the heart muscle is suddenly damaged due to the inadequate blood supply, it is called as heart attack na heart failure na cardiac arrest? Heart muscle suddenly damaged, it is called as heart attack. When heart is stop beating, it is called as cardiac arrest. खेल सस्पेंड हे गला बोधे वर्षा पई हिति बोधे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज when during the inspiration the pressure within the lungs, that is the less than the atmosphere pressure or more than the atmosphere pressure? During the inspiration pressure within the lungs, or it is also called as intrapulmonary pressure. The intrapulmonary pressure is less than the atmosphere pressure or more than the atmosphere pressure? कौन होबो? During the inspiration the pressure within the lungs is less than that, and जदि कहबा that is pressure within the lungs is positive pressure or negative pressure?
lungs ଭିତର ପ୍ରେସର ଟା positive or negative during the inspiration? During the inspiration the pressure within the lungs is negative or positive? कौन हबो 159 and 103. Okay, that is partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide. Negative pressure. Then मत को कि that is which muscle is increase the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis during the inspiration? Which muscle increase the volume of thoracic chamber in dorsoventral axis? को मसल टा जनरली इंस्पिरेशन बेले वॉल्यूम ऑफ थोरासिक चैम्बर को डोर्सोवेंट्रल एक्सिस रे इंक्रीज करे कोन आंसर डोर्सोवेंट्रल डायफ्राम दैट इज एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस रे बट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बा जा हम कहबा इंटरकोस्टल मसल व्हिच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक चैम्बर इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस देन मते को कि दैट इज adrenal cortex and adrenal medulla. Adrenaline is released from the adrenal cortex or adrenal medulla? Adrenaline is a hormone which is released from the adrenal cortex or adrenal medulla. Adrenaline ta generally कोट रिलीज है perfect is intercostal muscle. Then मत को कि adrenaline is a hormone which is released from adrenal cortex or adrenal medulla. कौन हबो adrenal cortex? Adrenaline is released from adrenal medulla. Perfect. Adrenal medulla. Then मत को कि adrenal gland रा maximum portion टा कौन adrenal cortex or adrenal medulla? Adrenal cortex or adrenal medulla generally कोटा हबो adrenal gland रो maximum portion टा कौन cortex or medulla. अब 2 मिनट रे हमें that is क्लास को end करिया. Then मते को कि that is melatonin and melanin which one is released from the sir खेल पाई नो क्लास होची ऑनलाइन क्लास that is melatonin and melanin which one is released from the pineal gland? Which one is released from the pineal gland? Melatonin and melanin. Generally melatonin is released from pineal gland. Okay, what is the function of melanin? What is the function of melanin? What about को pineal gland रो melatonin. Okay, what is the function of melanin? थोड़ा थोड़ा को what is the function of melanin? Melanin रो function कौन? Skin pigment. Okay, generally हम जदि कहया chloroplast, chromoplast, leucoplast which one is the storage body? Chloroplast, chromoplast, leucoplast which one is the storage body? Blackening of the skin. And जदि जगन्नाथ color जदि black color है due to the high melanin. Okay, which one is important for the storage? Chloroplast, chromoplast, leucoplast. कोटा होची that is for the storage ପାଇଁ important chloroplast, chromoplast, leucoplast ଭିତରେ. Chloroplast, chromoplast, leucoplast 2% charge. Okay, chloroplast, chromoplast, leucoplast. Leucoplast is important for the storage. हमें जाने चाहिए यदि that is the leucoplast which stores the protein is called as alleroplast or the amyloplast or the elioplast. The leucoplast which store the protein is called as alleroplast, alleroplast ना elioplast ना amyloplast जी की protein store करे. The leucoplast which store the protein is called as alleroplast. Okay. The leucoplast which store the fat is called as elioplast and the leucoplast which store the carbohydrate is called as amyloplast. Next question, organelle within the organelle is called as organelle within the organelle. कहा को हमें generally कहूँ organelle within the organelle. Organelle within the organelle. Face रो melanin color face रो pigment को skin color को डिनोट करे. ओके ठीक अछि शुभंकर रेडी. ओके राइबोसोम इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल. एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस बा आरआरएनए सिंथेसिस जनरली कोट हुए सेंट्रोजोम ना न्यूक्लियोलोस. राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस बा आरआरएनए सिंथेसिस टा कोट हुए सेंट्रियोल ना दैट इज हमें कहबा न्यूक्लियोलोस. इन व्हिच ऑर्गेनेल दैट इज द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस अकर्स? सेंट्रोजोम और न्यूक्लियोलोस. Then ribosome inclusion body which one is important for the storage of prokaryotic cell? Generally the excretory storage organ for the prokaryotic cells. Ribosome na inclusion body. Among inclusion body and ribosome which one is important for the storing of prokaryotic cell? Prokaryotic cell ପାଇଁ कोटा important? Ribosome or inclusion body? फटाफट कौन inclusion body ना ribosome? Which one is inclusion body? Ready? Tonoplast is the outer layer of. Tonoplast is the outer layer of.
टोनोप्लास्ट कहार आउटर लेयर टोनोप्लास्ट इज द आउटर लेयर ऑफ inclusion body टोनोप्लास्ट इज द आउटर लेयर ऑफ कहार टोनोप्लास्ट कहार आउटर लेयर शिवानी तृप्ति सत्य इप्सिता कान्हा स्वप्ना कृतिमयी दीप्ति शिप्रा विजयलक्ष्मी टोनोप्लास्ट इज द आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल ओके देन जदि कहिया दैट इज व्हाट इज द फार्मूला फॉर डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट व्हाट इज द फार्मूला फॉर डीपीडी ओपी प्लस टीपी और ओपी माइनस टीपी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीडी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीडी sorry what is the formula for DPD OP plus TP or OP minus TP osmotic pressure plus turgor pressure or osmotic pressure minus turgor pressure osmotic pressure minus turgor pressure then Ankita को that is जदि हमें कहिया वाटर टा सबल पई लो DPD रो हाई DPD को मूवमेंट करे और हाई DPD टू लो DPD एटा लास्ट क्वेश्चन water will move from the low DPD to high DPD or high DPD to low DPD कोन आंसर from को तृप्ति शुभलक्ष्मी सेंट्रोजोम कहार आंसर OP plus osmotic pressure minus turgor pressure DPD that is water will move from the low DPD low to high Sipra ready low DPD to high DPD Swapna Sarita centriole nucleolus is important for active ribosomal RNA synthesis low to high okay तो ये रहला तमर आज डिस्कशन तो नेक्स्ट क्लास रे हमें अलग किसी क्वेश्चन गाणी केसे ना तमर कौन से चैप्टर स्पेसिफिक आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर रे कोन चैप्टर आनी के तो कमेंट करो तो तमरो कमेंट अनुसार ही नेक्स्ट क्लास रे तो सेही चैप्टर आनिया नॉन लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आनिया नॉन लाइन क्यूए के क्वेश्चन आनिया तो जनरली तुम कमेंट करो एंड जो कमेंट मैक्सिमम तमर जोटा डिमांड थिबो तो सेही चैप्टर को हम आनी की डिस्कशन करिया एंड हैव ए नाइस नाइट एंड जनरली मैच देखो एंड एंजॉय करो एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम